So hello everyone. Let me check whether I'm audible or visible or not. So hello. Am I audible and visible, guys? Please let me know in the chat. So yes, I'm audible and visible. So so guys, how are you? Good. So we are in the journey of learning chapter motion and force of class 10th batch physics course. So without wasting time, let's come to the chapter motion and force. First, you have revised, guys. Yesterday, I also told that whatever we teach today, you have to, whatever I teach today, you have to what study that day. The day, whatever I teach, you have to study on that day for better visualization on the next class, and you have to practice the questions till now what we are covered. So, guys, we all know that we are covering the chapter motion and force, and it is the day 4. So if anyone joining this class, please keep watch the previous class for better visualization. And if you have any doubt and queries related to any the course or other problems, you can comment it out below, and make sure for make sure you have to make patience till the course is not in till the course end. So guys, please stay connected and make patience, and please like, subscribe. If you have any issue, you can also comment in this message in WhatsApp group and Telegram group. And let's further move to our chapter motion and force. First, let me recall the previous things what we have covered in the yesterday classes. That is what we have covered the activity example problems, that how the mass and distance is related to force or gravitational force, that how if we change the mass to mass of one object. uh, First, let me know whether the force of attraction between two objects exists or not. If we have one mass is on Earth and another mass is on Moon. Please comment it, guys. If you know, let me know. Okay, we all know that there exists a force between any two body, and also whether it is a strong force or a weak force, but there exists a force between two bodies, and how force is related with the mass of body, and
the distance of body. We all seen yesterday classes that if the mass of one object among two objects is doubled, then the force is also get doubled. And if the mass of both objects is double, then the force become four times of its original. And when the distance get double, the force become one by fourth of its original. And if the distance is half, then force become how much? It become four times of its original value. And that's all we have covered in yesterday classes. Now moving further to topic consequence of gravitation force. So today we will first cover the what consequence of gravitational force. What are the consequences of gravitational force? We will see. So there are some consequences of gravitational force and are presented below. Uh, Let me tell once again that we are following Circulam book for the concept. And if you have any doubt or any concept related issue, you can message in the WhatsApp community or any social community, that is Telegram or WhatsApp. Or if you have any problems regarding any other books of class 10th physics, then you can also comment it there or message in the group. So we all are following the circular book for class 10th for concept. So gravitational force has made the existence of the universe, including solar system, possible. The gravitational force between the sun and planet causes the planet to revolve around the sun. See, assume if the gravitational force is not there, then how we are all follow flowing, हम लोग बहते रहेंगे इधर उधर जब ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को कौन ऐसा हम क्यों ही नीचे ही क्यों है हम लोग हवा में क्यों नहीं है और इधर उधर क्यों नहीं फ्लो हो रहे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो कि हमें होल्ड किया हुआ है सरफेस ऑफ अर्थ पे that is because of the gravitational force we can also tell that there is the existence of universe because of the gravitational force इंक्लूडिंग सोलर सिस्टम हम लोग सब जानते हैं जो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स because of gravitational force these things are happening. Also moon is closer than sun to the earth. It is important even the gravitational force gravitational force has made the existence of the universe, including solar system. And also moon is the closer than the sun to the earth. It is important enough even to it has very small mass compared to the sun. The effect of the moon
gravitational is more visible to the sea water than on land due to which tides created. हम लोग कभी कभी देखते हैं कि सी और ओशियंस में टाइड्स क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज when the moon gets closer than the sun to the earth बिकॉज ऑफ वो मून हमारे अर्थ को थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचते हैं कुछ फोर्सेस लगाते हैं जो कि जिसके कारण वो टाइड्स क्रिएट होते हैं ओशियन और सी में जो टाइड्स जब मून गेट क्लोजर टू द अर्थ जो सी होते हैं ओशियन में टाइड्स क्रिएट होते हैं ना वो किसके कारण होते हैं ये फोर्स ऑफ मून जो एक्सर्ट करता है अर्थ पे जिसके कारण सी और ओशियन में हमारे क्या टाइड्स क्रिएट होते हैं लैंड पे तो हमें नहीं दिख पाता लेकिन सी में हमें आसानी से दिख पाता है वो फोर्स there is tides creation we can observe that is the point filling and the gravitational force between earth and the object on its surface make the object stick to the surface of the earth that's I earlier said हम लोग पहले वो बोल रहे थे ना क्यों हम लोग यहीं पे जमीन की सरफेस पे ही हम लोग क्यों हवा में नहीं चल पाते हम लोग जमीन जमीन वो चलने की बात अलग है हम लोग हवा में क्यों नहीं सरफेस पे ही क्यों होल्ड होके रखे क्योंकि दैट इज द force of earth which is exerted by the force center of the earth and also if possible object is thrown vertically upwards object will fall back on the ये लोग हम कभी टॉस उछालते हैं हम लोग बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं कभी टॉस उछालते हैं या फिर कुछ बॉल ऊपर जाता है तो वो वापस नीचे आता है या फिर कुछ हम लोग ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे आता है ना सरफेस ऑफ अर्थ पे वो ऐसा क्यों होता है बिकॉज अर्थ भी अर्थ का सेंटर फोर्स एक्सर्ट करता है वो ऑब्जेक्ट पे अपनी ओर दैट्स वाई इट इज कमिंग closer to the earth center and it pulls at the surface of earth and further we are moving to that is all about the consequence of gravitational force further moving to the topic gravity what is gravity earth and other planets and satellites are pulling their nearby object toward the center the force exerted by the planet or satellite on a nearby object is often called the force of gravity what is gravity first let me know every Earth, every planet, like let's say Earth and other planets, are pulling their nearby objects. जो भी हमारे नजदीक में कुछ वस्तु या जो भी सामान होते हैं वो हम लोग को जो ज्यादा भारी सामान होता है वो अपनी ओर खींचता है दैट इज due to the force exerted by the planet or satellite on nearby object is often called as the force of gravity. That is all. कोई भी दो वस्तु हम लोग रखते हैं दो जो फोर्स एक्सर्ट होता है छोटे वाले मास पे वो किसी कारण होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है दैट इज ऑल फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो भारी रहेगा मास में वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करेगा दैट इज ग्रेविटी in simple words we define force of gravity as the force exerted by
larger mass object on small nearby it is called force of gravity. And it is also called the weight of the object. We also know by the other term, that is, it is also known as the weight of object. So there is a difference between mass and weight. You all will know more details later. That is, mass is m and weight is what? mg, mass into gravity. We will all know in more details further later. So, according to the Newton universal law of gravitation, the force of gravity decreases with increasing the height of planet with height from the planet and become negligible at certain distance. Okay, how it is possible? जब हम लोग प्लेनेट प्लेनेट से दूर जाएंगे, मतलब विथ इंक्रीजिंग हाइट, मतलब जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो वेट हम लोग को कैसा फील होगा? हल्का फील होगा. Why do it is when we go up, then the force of gravity G will become how much less? When it is possible. When height increases, gravity decreases. Further, the weight is mg. So if g decreases, then weight will also decreases. Mass into g times will also decreases. Weight is mg. If g is decreasing, the whole product of mg is also decreasing. That's that's then weight is also decreasing. देखो, फर्स्ट हम लोग के पास ये है कि जब हम लोग प्लेनेट से थोड़ा हाइट, कोई भी प्लेनेट पे हैं हम लोग, जैसे कि अर्थ पे, तो हम लोग उसके कुछ हाइट पे ऊपर जाएंगे, तो हमारा जैसे ही हाइट बढ़ेगा तो जी डिक्रीज होगा, एंड जी डिक्रीज होगा तो एम जी. पहले वेट वेट को हम सब कैसे डिफाइन करते हैं? मास टाइम ग्रेविटी. And if G decreases, then product of if mg is G is decreases, then mg will also decreases, and further weight is decreases. So and it will एक ऐसा टाइम आएगा जब वेट जीरो हो जाए, क्योंकि जी किसी टाइम किसी हाइट पे जी इक्वल टू जीरो हो जाए, एंड जब जी जीरो होगा वेट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो. And we observed many we observe many effects of Earth gravity in our daily life. Some of these effects are all the object. हम लोग जब ऑब्जेक्ट को जब किसी चीज को तौलते हैं, तो इसके कारण वेट हम लोग तौल पाते हैं या फिर नाप पाते हैं, या वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, क्योंकि वेट इक्वल टू एमजी होता है. जो एमजी होता है उसमें जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही वेट हम लोग नाप पाते हैं या तौल पाते हैं. दूसरा, अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ग्रेविटी. हमारे चारों एटमॉस्फेयर, एयर या अदर गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस और एटमॉस्फेयर, वो सराउंडेड है हम लोग के पास किसके कारण?
फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट फॉल टू अदर सेंटर। किसी चीज को हम लोग कुछ हाइट पे से छोड़ेंगे तो वो नीचे सेंटर ऑफ नीचे आ जाता है, दैट वो सेंटर ऑफ अर्थ के की ओर अट्रैक्ट होता है। वो किसके कारण होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वाटर इन रिवर स्ट्रीम फ्लोज डाउनवर्ड। हम लोग वाटर के स्ट्रीम में देखते हैं कि अगर झरना पे देख लेते हैं, झरना नीचे क्यों जाता है? झरना का पानी नीचे ही क्यों जाता है? ऊपर भी तो जा सकते हैं। वो किस कारण होता है? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ग्रेविटी का, for better understanding and better visualization with one example. So जब जब हम लोग एक स्टोन और एक सबसे पहले हम लोग को ये एक्टिविटी करने के लिए क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ों का जरूरत पड़ेगा? एक स्मॉल स्टोन और एक स्टॉप वॉच का जरूरत पड़ेगा। तो जब हम लोग एक ड्रॉप करेंगे स्टोन को सम हाइट से, let's say there is some height h, and here and we are dropping one stone to downward, and we have a stopwatch. So जब हम लोग स्टोन को छोड़ेंगे तो ये वाला जो हाइट है, ये इसी टाइम पे स्टोन यहाँ पे आएगा। आएगा ना? वो आएगा क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ अर्थ का वो अपने सेंटर की ओर खींचेगा, और यहाँ तक आने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो जब हम लोग स्टोन को छोड़ेंगे तो वो डाउनवर्ड फोर्स के कारण वो अर्थ के सरफेस पे आएगा, एंड हम लोग एक अपने दोस्त को बोलेंगे रिकॉर्ड स्टॉप वॉच पे रीड करने के लिए। सो लेट से टाइम पे वो नीचे आए, टोटल टाइम लगा इसको आने में कितना? टी। एंड तो वो टी क्या होगा? हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। हम लोग पहले ही जानते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। हाइट इक्वल इज इक्वल टू क्यू पी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये चीज मत पूछना कैसे होता है, ये हम लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े थे। डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल स्पीड इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन इंटू स्क्वायर ऑफ टाइम। तो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? एच है। और इनिशियल स्पीड हम लोग को क्या है? हम लोग का इनिशियल स्पीड क्या है? हम लोग को कुछ स्पीड दिए नहीं, जीरो इंटू टी। और एक्सलेशन क्या है? एक्सलेशन हमारा एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी है कि नहीं? We also we can also take the formula as b square equal to u square plus 2gh, that is also the equation of motion. So हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्सलेशन एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। हम लोग को पता है कि फाइनल वेलोसिटी भी है, हम लोग यहाँ पे देखिए भी है, ठीक है। और यू हमारा जीरो है। तो
हमारा यहाँ पे v p है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड क्या है, जीरो। ये हम लोग को पता है। और anything was due to the gravity and it acts as a constant throughout the motion. The more object falls, faster the velocity. Increasing the velocity of object of mass means it gets ready. और हम लोग को पता है कि g क्या होता है 9.8 g जो हमारा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और p हमें फाइंड करना है। गाइस हमने मैं बताना भूल गया कि एक्सलेशन जो एक्सलेशन से अर्थ हम पहले इनकी बता दिए थे, ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे ब्रेक को। जो जी होता है क्या है, जिस एक्सलेशन से अर्थ अपनी ओर खींचता है कोई किसी भी चीज को, उस एक्सलेशन को क्या बोलते हैं, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको डिनोट करते हैं जी से। और एक्सराई यूनिट इसका होता है वॉट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ई क्या निकलेगा और एच क्या निकलेगा, एच इक्वल टू हाफ ए टी एस 9.8 टी स्क्वायर और जी टी स्क्वायर। और हमारा यहाँ से क्या है कि एच इक्वल टू जी टी स्क्वायर। तो हम लोग एच इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू बोल सकते हैं 2h बाई जी, और टी इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट 2h बाई। ये हमारा टाइम होगा जो इस ऑब्जेक्ट को जब सम हाइट डिस्टेंस से ड्रॉप करेंगे। और यहाँ से हम लोग वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। हमारा फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर होगा और टू हमारा क्या है जीरो प्लस टू जी, तो इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट टू जी एच। कैन कंक्लूड। सो क्या एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी वेरी कर सकता है मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट से? अच्छा तुम लोग बताओ अब, इफ अगर हम सम डिस्टेंस हाइट पे एक स्टोन और पेपर को एक ही टाइम पे छोड़े और देखे तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा? or this activity, take a small stone, a sheet of paper, tear the sheet of paper into two equal parts, squeeze one of them tightly into a ball pen, drop the sheet of torn paper and a paper ball and the stone together. Which one reaches the ground first? So एक हमारा एक हम पेपर लेंगे, वो हम फाड़ के एक बॉल स्क्वीज करके बॉल बना लेंगे एक पेन में, पेन को
एक को हम लोग ऐसा करेंगे कि एक को सिंपली छोड़ देंगे एंड एक स्टोन को गिराएंगे, तो which one reaches the ground first, हम लोग को ये बोला गया. Does the sheet of paper, the paper ball and the stone fall at different velocity in this activity be, and if this activity we do on the moon, what does the result? The sheet of paper, the paper ball having the same mass. इसका आंसर क्या होगा गाइस, पहले कमेंट करके चैट बॉक्स में बताएं. वो दोनों सेमी टाइम पे सेमी वेलोसिटी से जाएंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी दोनों के लिए सेम. दैट इज ऑल रिटन देयर. In this activity, the sheet of paper and paper ball have same mass, fall at different velocity, but the paper ball and the stone having different mass fall together. वो velocity भले ही differ हो, change on an object toward the surface of Earth is not related to its mass. When the sheet of the rate of change of velocity of an object toward the surface of Earth is not related to its mass. We all know the velocity doesn't depend on mass. What is the, we have already defined here. See, what is the velocity? Velocity is half root under 2gh. Is there any terms related mass there? No, there is only gravity and heights. So it is not related to mass. So now, but there is air resistance exerted and upward force on it. The velocity decreases on their air resistance भी तो एटमॉस्फेयर में होते हैं ना. जो पेपर शीट ऑफ पेपर है वो जब नीचे गिरेगा तो उसमें एयर रेसिस्टेंस भी एक्सर्ट होगा, सो उसके कारण वेलोसिटी डिक्रीज हो सकता है. बट इन द केस पेपर बॉल एंड अ स्टोन, air resistance is negligible and they fall together. सो पेपर तीनों में वेलोसिटी का वेरिएशन किस कारण आया? एक एयर रेसिस्टेंस के कारण आया, और दूसरा जो पेपर बॉल है और स्टोन है वो सेम टाइम पे सेम स्पीड से जा रहा था. ऐसा क्यों? क्योंकि जी दोनों के लिए सेम है, हाइट दोनों के लिए सेम है, और मास दोनों का सेम है. तो वो दोनों सेम वेलोसिटी से जा मास से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. मास यहाँ पर कोई टर्म ही यूज नहीं हुआ है भी के लिए. सो वो दोनों सेम वेलोसिटी से गिरेंगे. दैट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट गाइस? प्लीज लेट मी नो. एक पेपर था हमारे पास, एक उसको फाड़ के हम लोग एक स्क्वीज करके एक स्टोन बॉल पेपर बनाए. एक आधा जो पीस था उसको ऐसे ही रखे, एक स्टोन था उसको ऐसे ही रखे. वो तीनों लेट से एक हाइट था एच. ये तीनों जब एच हाइट से नीचे गिराएंगे तो पहले तो इसमें समथिंग एयर रेजिस्टेंस लगेगा, तो इसके कारण वेलोसिटी में इसका कुछ चेंजेस आएंगे. और ये दोनों जो है इसका वेलोसिटी कितना होगा? अंडर रूट 2gh. इसका भी है, आएगा कितना? v2 = अंडर रूट 2gh. तो दोनों का 2gh है, तो ये दोनों तो सेम स्पीड से जाएगा. बस ये थोड़ा एयर रेसिस्टेंस के कारण इसमें इसके वेलोसिटी में थोड़ा वेरिएशन आ जाए. That's all about in this activity. You can also do activity by feather and coin experiment. You can observe. So do activity practically so you can understand very well.
एंड विजुअलाइज. नाउ हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू. सो नाउ वी हैव calculation of what acceleration of due to gravity. ये वाला हम लोग सब बहुत धीरे धीरे चलेंगे गाइस, जैसा कि हम लोग पहले ही रोड मैप शेयर कर चुके हैं. सो वी ऑल complete all the topics and syllabus in time, enough time, so we can even do revision 2 or 3 more times. So we have force of gravity, what we have earlier derived. Force is force of attraction between two body, or force of gravity is how much? G of G time into mass, product of mass of two bodies by a square distance, a square of distance between them. So now we all know force in force by other formula also, that is force is mg, or we can say weight is mg. See, from equations first and second we can conclude that mg is here. M is what? M is the mass of earth, and M is the mass of that object, and here is also mass of object. So from here M will be cancelled out. So G is how much? G of mass of earth and a square distance between them. So now we will put the value, and we will get as G is how else, gravitational constant is how much? हम लोग का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और मास ऑफ अर्थ हम लोग जानते हैं कितना होता है? ये चीज दिया हुआ तो नहीं है, बट हम लोग देखेंगे. अप्रोक्स 5.97 के 5.97 10⁻24 के आसपास होता है. और जो डी स्क्वायर होता है वो रेडियस का स्क्वायर होता है, और रेडियस हमारा कितना होता है? रेडियस अप्रोक्स हमारा होता है 3.39, ऐसा ही कुछ करके होता है. 3.3 इंटू let me search. ये याद हो जाना चाहिए गाइस. 6 पॉइंट सॉरी, इट इज 6.64 into 10 to the power
6 मीटर के आसपास होता है। तो 6.64, ऑफ कोर्स ये हमारा कितना हो जाएगा, फर्स्ट लेट मी कैलकुलेट। So Ashutosh Bajpai is asking by 10th ना, ये कहाँ है guys, please check circulum book, let me। so भाई हम लोग सर्कुलम बुक फॉलो कर रहे हैं, मैंने ये पहले ही बताया था। और कोई डाउट है तो लेट मी नो। हेलो सर एवरीवन। Guys, if there is any issue or any doubt, you can comment in the chat box। So हमारा ये अप्रोक्स कैलकुलेट करेंगे तो 9.8, सॉरी, सेशन ऑफ ग्रेविटी जो हमारा होगा वो अप्रोक्स 9.8 के आसपास आएगा। ये पहले से मैं जानता हूँ, तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो ये फाइंड करोगे कि 9.8 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आएगा, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट मी कैलकुलेट आल्सो। 6.67 into 5.9 into 10 to the power 24 minus 11 and 6.64 into 10 to the power 6 को 6 को भी ऊपर भेज देते हैं तो हमारा ये जो आएगा 6.67 इंटू 5.9 बाई 6.64 इंटू 6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो पहले 10 टू पावर 23 आएगा, ये ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, ये लेट से कैंसिल। यहाँ से हम लोग काट के आए तो let's say sorry guys, I have 6.67 into 5.9 जो होगा वो कितना होगा, कुछ ये अब 30, ये अब आपको आ जाएगा 39, 35.3 के आसपास। और ये जो आएगा 664, तो हमारा 359.3 डिवाइडेड बाई 664 जो आएगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑफकोर्स 9.8 न्यूटन के आसपास आएगा गाइस। ये आप लोग देख लेना थोड़ा। सो दैट इज ऑल। Further, we will do the all things in, uh, that's all from
That's all from today my side. If you have any issues regarding the course or any problem, you can directly comment in the chat box, or you can also put a message in WhatsApp or Telegram community, so we can help you as soon as possible. Thank you.